my dear parents and students, welcome to Ruchi Sharma videos. Today we are covering divisibility rules. What are divisibility rules? I have seen students are having doubts about the divisibility rules. The very first thing which I want to tell you is about the divisibility. Most of the time students are confused. What is this divisibility? So let's discuss this first. Divisibility means when we can divide one number completely with another number. Take an example. Suppose it is 12 divided by 2. So is 12 divisible by 2? What we have to check? क्या 12 2 से divisible है? तो हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे. 2 6 are 12 and we will find 0 remainder and 6 is the quotient. Divisibility का मतलब है कि remainder should be 0. If remainder is 0, then we can say कि 12 is divisible by 2. So yes, 12 is divisible by 2. If the number is 72,695 and we have to check whether this number is divisible by 2 or not, then we will divide this number 72,695 divided by 2. 2 3s are 6, minus 1 minus 6, 1 will come, 2 will come down, 2 6 are 12, 0 6 will come down, 2 3s are 6, 0 9 will come down, 2 4s are 8, we will subtract it 1 and 5 will come down, it will become 15, 2 7s are 14. In this case the remainder is not equal to 0. That means 72,695 is not divisible by 2. Not divisible. तो सबसे पहले तो हमें divisible का मीनिंग ही पता होना चाहिए. जैसा कि हमने देखा, अगर किसी भी डिवाइड करने पर, किसी नंबर को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 है, तभी हम कहेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है. अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर है, देन वी विल से कि 72,695 डिविजिबल नहीं है 2 से. तो जब छोटा नंबर था हमने इजीली चेक किया. बड़े नंबर को चेक करने के लिए हमें पूरा डिवाइड करके देखना पड़ा. लेकिन अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो हम इजीली बिना इस डिवीजन के बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है किसी भी नंबर से. तो चलिए शुरू करते हैं चेक करना डिविजिबिलिटी रूल्स. सबसे पहला रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2. If we have to check the divisibility of any number by 2, that means whether that number is divisible by 2 or not. मतलब कि अगर हमें देखना है कोई भी एक नंबर क्या वो 2 से डिविजिबल है, क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है. टेक एन एग्जाम्पल. इफ इट इज 98,435, हम सिर्फ यूनिट्स प्लेस को चेक करेंगे, वंस प्लेस को, और देखेंगे कि क्या ये जो नंबर है इज इट एन इवन नंबर. इफ यस, देन वी विल से दिस 98,435 is divisible by 2. But here in this case 5 is not an even number. तो हम क्या कहेंगे? This number is not divisible. आप इसको डिवाइड करके देखोगे तब भी आपको क्या नहीं मिलेगा? रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा. इसीलिए without division we can just check whether the number is divisible by 2 or not. Understood? And what are even numbers? The numbers which comes in the table of 2.
including 0. Okay, 2, 4, 6, 8 and 0. These are the even numbers. If these are the numbers and so on, like 10, 12 and so on. Okay, so if these are the numbers at one's place, we will say the whole number is divisible by 2, otherwise it is not divisible by 2. I hope this is clear. Coming to next rule. Now we are checking the divisibility rule of by 3. 3 and 9 are almost same. So we will, after 2 we will learn 3 and 9. Okay, what we have to do? If it is a number 724 and we have to check whether it is divisible by 3, then we have to find the sum of digits. Sum of digits. Here the digits are 7, 3 and 4. We will add 7 plus 3 plus 4, which is 14. Now we will see, is 14 a multiple of 3? Multiple means क्या ये 14 3 के टेबल में आता है, या क्या 14 को 3 पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. 14 3 के टेबल में नहीं आता है. सो वी विल से 734 is not divisible by 3. Clear? Similarly, for checking the divisibility of 734 by 9, we will again find the sum of digits. That means 7 plus 3 plus 4. It is 14. This time, because we are checking the divisibility by 9, so we will see whether this number is a multiple of 9 or can 9 divide this number completely. मल्टीपल होगा तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर तो 14 9 का मल्टीपल नहीं है. सो just by doing this step we can say whether this number is divisible or not. So 734 is also not divisible by what? By 9. Very good, by 9. Hope it is clear. दोनों रूल्स सेम हैं. डिजिट्स को ऐड करना है. अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो ये नंबर sum of digits should be the multiple of 3. If it is the rule for 9, then this sum should be a multiple of 9. अगर ये 9 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से completely डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा. तो डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये रूल आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट रूल. नाउ वी आर चेकिंग द डिविजिबिलिटी by 4. Divisibility by 4 is very easy. Suppose the number is 5218. It may be any number, any large number. Okay, so we just have to take these two digits from the right hand side. That means ones and tens place. Which number is it? That is 18. So we will just check, can we divide 18 by 4 completely? 4, क्या हम 18 को 4 से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं? ट्राई करते हैं. 4 4 जा 16, बट यहाँ पर तो 0 नहीं आया है रिमाइंडर. दैट मीन्स हम 18 को 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर पूरी तरह से ये दो डिजिट से बना हुआ नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, देन वी विल से this complete number is also not divisible by 4. That means 5218 is not divisible by 4. Is it clear? कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. सपोज इट इज 5,09,024. We will take the last two digits. If it is divisible by 4, then we will say yes, the complete number is divisible by 4.
here the remainder is 0, that means 24 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो हम बोलेंगे कि 5,09,024 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो पूरे को डिवाइड कर नहीं देखना है, रूल्स को आपको याद करना है। नाउ कमिंग टू द आफ्टर 4 वी विल check the divisibility rule of 8. Divisibility rule of 8. It is very much similar to 4. Suppose एक नंबर है 729, तो हमें 3 डिजिट्स लेनी है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस तक की, और उसको डिवाइड करके देखना है 8 से। ठीक है ना? अगर वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है देन वी विल से यस इट इज डिविजिबल। अब आप कहोगे ये तो डिवाइड करना पड़ रहा है। बिल्कुल डिवाइड तो करना पड़ेगा अगर रूल है तो। रूल क्या है? हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेसेस तक नंबर्स लेने हैं। जो भी नंबर फॉर्म होता है जैसे कि 729, उसको 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, तो हम कहेंगे ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब फ़ायदा क्या है? अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, तो देखते हैं क्या करना है। टेक एन एग्जाम्पल 73,929। We will take 3 digits, ones, tens and hundreds place. We will divide only 929 by 8. 8 ones are 8. 1 will come down. 2. 8 ones are 8. 4. 9. Can we divide 49 by 8? 8 6 are 48. We are left with 1. We are left with 1 as remainder. That means 929 is not divisible by 8. So we will say the complete number 73,929 is also not divisible by 8. I hope this rule is clear. Very similar to 4. 4 में we will take only 2 digits and in 8 we will take 3 digits to check the divisibility. कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इसी सीक्वेंस में हम लर्न करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको रूल सिखाया रैंडमली, 2 का सिखाया है, फिर 3 और 9 का सिखाया है, उसके बाद 4 और 8 का सिखाया, इसी तरह से आप भी इनको लर्न करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल। नाउ वी आर चेकिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. It is very easy. Any number 78,49,005, 53,249, 175, 620, 70, 2,46,73,230. Suppose these are the numbers. Then we will only check the units place. If it is 5 or 0, तभी हम कहेंगे ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर देखिए units place is 5. That means it is divisible by 5. Here the units place is not 5, neither 0 or 5. या तो 0 हो या फिर 5 हो, इसमें से ये नहीं है। So this number is not divisible by 5. Here 175, the units place is 5. It is divisible by 5. If the units place is 0, then also we will say it is divisible by 5. So this is also divisible. And see, units place is 0. कितना भी बड़ा number हो, we will just check the units place. If it is 5 or 0, we will say it is divisible by 5. I hope this rule is clear. Very easy. Now we are checking the rule of 10. Rule of 10 is very easy. The units place in any number
142, 78,390, 3,400. The units place should be 0, only 0, not 5. 5 and 0 है 5 के रूल में. It is the divisibility rule of 10. Here we have to check only it should be 0. Then we will say yes, it is divisible by 10. Here the units place is not 0, so ये divisible नहीं है. Here the units place is 0. Yes, it is divisible. Again it is 0. Yes, it is divisible. So these are the divisibility rules which you have to understand. अब तो बहुत ही ईजी है आपको समझना. ये वीडियो देखने के बाद तो सब कुछ ईजी हो गया है. तो इसको रिवाइज कीजिए. फिर भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके बताइए. मुझे मेल कीजिए ruchi3006 sharma@gmail.com पर. Now we are left with the divisibility rules of 7 and 11. इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे पर ही शेयर करने वाली हूँ, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और हम इजीली इसको समझ पाएँ. तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए. जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर द कमेंट्स. पसंद आया तो करिए फ्रेंड्स को शेयर, ताकि बाकी लोग भी इसको सीख सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.